2021 की बात when I was dropped from the ODI squad. I could say that was the most toughest part of my life. I have never ever been dropped in any team, whichever team I've played for. चाहे कोई भी टीम से मैंने खेला है, कभी मुझे हटाया नहीं गया। Till now. आप When you're dropped from somewhere, कहीं से तुम्हें अगर निकाला जाता you है, also tend to feel that you're not good enough. आपको ऐसा भी लगता है कि शायद आप अच्छे नहीं हैं। I remember I used to go for practice मुझे during that याद time, है उस समय जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी and I used to dread going for practice. और जाने के लिए भी मैं डरती थी। I used to be so fearful and afraid. कितना मैं डरती थी। And whenever I used to look, जहाँ पर भी मैं देखूं, I used to just feel like everyone's looking at me as a failure. You know that और they सभी- all know I'm dropped. And during that time, one good thing that happened, और उस समय एक अच्छी चीज जो हुई we had our prayer meetings on Zoom, and I started leading praise and worship. और वहाँ पर स्तुति प्रशंसा में आगे बढ़ाने I लगी। started spending time in the Word, hearing Brother Ivan, Brother Larson speak. ब्रदर आइवन, ब्रदर लार्सन जो वचन सुनाते थे वो सुनने में लगी। And I don't know that used to help me so much for what I was going through at that तो time. उस समय जो पीड़ा से मैं गुजर रही थी मुझे बहुत मदद मिली। Just forgetting everything and still putting your hands up, and you have to lead people. तो सब कुछ भूल कर अपने हाथों को और उसके ऊपर लोगों को मुझे आगे When you बढ़ाना था। yourself have questions, you have to lead people and tell people that God is good. But I think praise and worship has a special power, you know. तो स्तुति प्रशंसा में वो बड़ी ताकत होती है। It changes your perspective. तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल देता And है it shows you और तुम्हें दिखाती है that even though you don't have all the answers, तुम्हारे पास सारे उत्तर नहीं है फिर भी and you're not in control, और तुम संयम में नहीं हो। but God is still sovereign and He is in control. All the great heroes in the Bible, बाइबल के सारे जो नायक हैं, you take Moses, चाहे वो मूसा हो you take Joseph, या यूसुफ हो you take David, या तो दाविद हो for that you take Jesus too. या तो आप यीशु को ही ले लो। All of them went through the wilderness. The wilderness is a place of preparation. You know, God uses that. It doesn't matter who you are. चाहे आप कोई भी हो, God has a process प्रभु का एक ऐसे क्रिया होती है which no one can escape. जिससे कोई बच नहीं सकता। You know why you can't escape? क्यों नहीं बच सकते? Because He loves you. The Israelites, तो इजराइल के जो लोग when थे, Moses was leading them through the wilderness, God was with them प्रभु उनके साथ थे with a pillar of cloud by day and a pillar of fire by और night. रात में एक अंगारे का खंभा बनकर। You know, God doesn't have to sign up for this. तो प्रभु इसके लिए आने के लिए उनके लिए जरूरी नहीं He थी। can easily sit there up in heaven, sitting on His throne and say, स्वर्ग में सिंहासन पर आराम से बैठकर वो कर सकते थे you go through this on your own. कि अपने आप जाओ इस जगह से No, गुजरो। but God loves you and me so much. मगर प्रभु When तुमसे His मुझसे children इतना प्यार is करते hurting, हैं। imagine how much more difficult it is for your Heavenly Father when He sees His own child, His own daughter hurting, how much more difficult it is for Him, and love wants to be there in the pain. And trust me, it is painful, but in everything, मगर इन सब चीजों में God just kept revealing Himself to me. God held my hand and walked with me. प्रभु ने मेरे हाथ पकड़कर मेरे साथ वो चले। And the times I couldn't walk because I just so tired and just so frustrated and मगर- just wanted to give up, कुछ दिन ऐसे भी थे कि मैं इतनी थक चुकी थी, मैं चलना नहीं चाहती थी, मैं हार मानना चाहती थी। God carried me in His arms and He said, I will carry you प्रभु because I love you so ने much. ऐसे मुझे हाथों में उठाकर कहा कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। But I had to go through that मगर उस स्थिति से तो मुझे गुजरना ही था to get to where God actually wanted me to be. ताकि मैं वहाँ पहुँचूं जहाँ प्रभु चाहते थे कि मैं पहुँचूं। You know, I'm telling you the story in short, but when you're actually going through it, it's almost 2 years, okay? तो ये कहानी जो है छोटी लगेगी मगर मैं 2 साल से इन सारी चीजों से गुजर रही When थी। you're actually going through it every day, you know, feels like such a challenge sometimes. तो जब ऐसी स्थिति से गुजरते हो तो हर दिन एक चुनौती जैसा लगता है। But what's our part? मगर हमारा Like काम what क्या brother है? said. जैसे ब्रदर ने कहा, You keep at it. आप लगे You रहो, keep putting one foot in front of the other. एक पैर दूसरे पैर के You आगे keep doing कदम everything you बढ़ाते can जाओ। and then trust God with the rest. जो आप कुछ कर सकते हैं वो करो और फिर बाकी पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखो। And my brothers and sisters, like after 2 years, और मेरे प्यारे भाई और बहनों 2 साल I के can see the बाद restoration I actually knew that God could do. जो पुनर्प्राप्ति में जानती थी कि प्रभु करेंगे, He actually did much more beyond all I could ask उससे or think or ज़्यादा- imagine. So I'll just show you about everything that God did. And I believe that it's just the beginning और of what मेरा यही what विश्वास God's है restoration is all about. कि Amen? ये तो बस शुरुआत These है are जो above भी and प्रभु beyond ने God. किया है। ये मेरे This was सबसे परे 2023 season for me. So I was dropped in the ODIs. I came back into the team. Recently I made my test debut where on debut I scored, like God scored for me 69 runs. We had the Asian Games हमारे एशियन गेम्स हुए थे where first time ever cricket was included and India for the first time won the Asian Games gold medal. Again, I was the highest run scorer of that entire tournament. पुनर्प्राप्ति यही थी कि पूरे टूर्नामेंट में मैं सबसे ज्यादा रन बटोरने वाली में से बनी। Then came the domestic season. तो फिर बाद में घरेलू खेल आए। For those who don't know, the domestic is the state matches. I play for तो Mumbai. घरेलू हम कहते हैं मैं मुंबई के लिए खेलती हूँ। पहली Mumbai बार won the championship मुंबई पहली बार चैंपियनशिप जीती and I was the captain of that team. Not just that, again in that tournament, और उतना ही नहीं बस वही टूर्नामेंट में फिर से I was the highest run scorer. सबसे ज्यादा रन बटोरने वाली मैं ही थी। Amen? Amen. And I got the player of the entire tournament. Then the restoration. फिर वो पुनर्प्राप्ति I was the highest run scorer for India in Test and in ODIs in this entire year. And I was dropped from the ODI team, right? ओडीआई टीम से मुझे बाहर निकाला था क्या In a सही few है? days, और कुछ दिनों में BCCI has given me the award बीसीसीआई मुझे अवार्ड देने वाली of है। the highest run scorer in ODIs for India. So if God makes you wait, अगर प्रभु तुम्हें रोक के रखता है, it is not because you've done something wrong. ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है। God makes you wait because He loves you प्रभु तुम्हें रोक के रखता है क्योंकि तुमसे वो प्यार करता and है He's preparing you
और तुम्हें तैयार कर रहे for a हैं greater restoration. ताकि वो एक महान And like I पुनर्प्राप्ति said, I believe बने। this is just the beginning for me. और Amen. जैसा मैंने कहा ये तो बस 2024 is a year शुरुआत है। of good success. Amen. 2024 तो सफलता का वर्ष Hallelujah. है। हालेलुया।